Hello bachcho, let's read this question. So the question says the desired product X can be prepared by reacting the major product of the reactions in list 1 with one or more appropriate reagents in list 2 and given order of migratory aptitude aryl greater than alkyl greater than hydrogen. So यहाँ पर product X की structure दी गई है. So this is methyl phenyl phenyl then carbon then COOH. So list 1 में 4 reactions given है and list 2 में 5 sets of reagents given है. Alright, so let us solve this question, and here the key concept is chemical properties of carbonyl compounds. Alright, so let us first solve these reactions. So first जो reaction given है, that is a pinacolone rearrangement. So let us talk about P. This is the structure. pH, दो pH groups attached हैं and other carbon में दो methyl groups attached हैं, and here we have this OH and another OH, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं H2SO4. So H2SO4 source of H plus है because this is an acid. So इन दोनों में से ये वाली हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोटोनेट हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है. सो प्रोटोनेट होने के बाद दिस विल फॉर्म OH2 plus, then here we have pH, then pH, then here we have OH, then methyl, and then methyl. Alright, then this OH2 plus can leave and यहाँ पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा. So this is the कार्बोकैटायन, pH, pH, then OH, methyl and methyl, and यहाँ पर positive charge है, so one methyl group can migrate over here and we will get a structure like this. And यहाँ से जो oxygen का lone pair है, that can come over here. So we will get a structure like this: methyl, phenyl, and then phenyl, and then here we have double bond O, H plus, then methyl. Alright, and इसमें जो water है, जो reaction medium में water है, that can abstract this H, so we will get only this. Alright, after elimination of H plus. Now यहाँ पर ये वाला part हमारा जो product है उसके साथ same है, but यहाँ पर इस part में C double bond O Me present है, but हमें carboxylic acid group चाहिए C double bond O OH. So हमें methyl को OH में convert करना है. So this can be done by haloform reaction. And haloform reaction के लिए जो reagents हैं, those are NaOH and X2, or we can also use NaOX. Alright, so इसमें क्या होता है, ये जो COMe ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है to form COO minus, and upon acidification this forms COOH. So NaOH and X2 is correctly given in first set of reagent of list 2, I2 and NaOH, and number 5 में है NaOBr. ये दोनों ही यहाँ पर haloform reaction करवा सकते हैं. So we'll register number 1 and 5 for P. Now let us talk about the reaction Q. So यहाँ पर जो structure given है, that is pH, then pH, and यहाँ पर NH2, then here we have methyl, and here we have OH. Alright, and यहाँ पर सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड हियर वी हैव हाइड्रोजन, और इसमें भी हम ऐड कर रहे हैं HNO2. सो
HNO2 से क्या होगा? This NH2 group will be converted to N2 plus, alright, which is a good leaving group. pH, then here another pH, here we have N2 plus, then this is OH, यहाँ पर hydrogen and यहाँ पर methyl. Then oxygen का जो lone pair है, that will come over here, and one of these groups, यहाँ पर दो groups present है, एक hydrogen और एक methyl, so methyl will migrate over here and N2 यहाँ से leave कर जाएगी, so N2 will leave and then we will get this structure, pH, then methyl, then pH, and here we have double bond OH positive and hydrogen, और यहाँ पर जो H positive present है उसको हम remove कर सकते हैं with the help of water, so water will abstract this proton and then we will have pH, Me, then pH, then C, double bond OH, but हमें product में इसके बदले हमें C double bond OH चाहिए, so we can do it by oxidation, and this oxidation can be done by first Fehling's solution, and second Tollens reagent. Alright, so list 2 में Fehling solution given है and Tollens reagent भी given है, which is AgNH3 whole 2 OH. Alright, so Tollens reagent is AgNH3 whole 2 OH. Alright, so दोनों ही list 2 में given है, so we will register number 2 and number 3 for Q. So 2 and 3. Now let us talk about R, reaction R. So reaction R में है, ये एक structure given है, so this is pH, Me, यहाँ पर OH है, and then here we have another OH, then pH and methyl. Now ये एक symmetric dihydroxy compound है and इसमें हम add कर रहे हैं H2SO4. So H2SO4 is a source of H plus ions. Now since ये symmetric है, any of these hydroxyl groups will attract one proton. So ये proton attract करने के बाद so ये भी कर सकती है and दूसरा जो hydroxyl group है वो भी कर सकता है. So let us consider the second OH group and then यहाँ पर एक OH2 ion form होगा. Alright, so this is pH, Me, here we have OH2 positive, then यहाँ पर OH, then pH, and here we have methyl. Alright, then this OH2 plus can leave and we will have a carbocation. So this is pH, methyl, then here we have OH, methyl and pH, and here we have a positive charge. Now यहाँ पर दो groups present है, this methyl and this phenyl. So methyl और phenyl में से phenyl के migratory aptitude ज़्यादा है, so this phenyl group will migrate over here and then we will get this structure, pH, then methyl, then pH, and here we have C double bond O and then methyl. Since यहाँ पर OH था, oxygen अपने lone pairs इसमें shift कर सकती है and after removal of H plus, alright, after removal of H plus we will get this compound. And here again we have this C double bond O Me, जिसको कि हमें convert करना है C double bond O OH में, carboxylic acid में. So we can do it by oxidation or using haloform reaction.
ऑलराइट, सो हैलोफॉर्म रिएक्शन में हमारे पास लिस्ट 2 में दो रिएजेंट्स प्रेजेंट है, नंबर 1 में I2 एंड NaOH एंड नंबर 5 में NaOBr. So I2 NaOH which is in number 1 and NaOBr in number 5. So we can use 1 and 5 for R. Now let us talk about the reaction S. यहाँ पर PH यहाँ पर Br है, then methyl hydrogen यहाँ पर OH है, and we are reacting with AgNO3. So this is PH and then यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ पर ब्रोमीन एंड देन हियर वी हैव OH. सो इसमें हम ऐड कर रहे हैं AgNO3 which gives Ag plus ions. So Ag plus ions क्या करती है, जिस भी कंपाउंड में क्लोरीन या फिर ब्रोमीन अटैच्ड है उससे वो क्लोरीन या ब्रोमीन को रिमूव कर लेती है एंड वहां पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है. सो दिस विल रिमूव दिस ब्रोमीन एंड यहाँ पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा. ऑलराइट, सो वी विल हैव PH, then here another PH, and here we have this OH, हाइड्रोजन और मिथाइल, एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है. नाउ यहाँ पर दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन एंड मिथाइल, जिसमें से कि अल्काइल दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप की migratory aptitude ज़्यादा है. So this methyl group will migrate over here and we will get this structure PH, methyl, and then another PH, and here we have C double bond O, क्योंकि यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ आ सकती है, C double bond OH plus, and then here we have हाइड्रोजन, जिसमें से कि प्रोटॉन निकलने के बाद this will form PH, Me, then PH, then C double bond OH. Now इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है जिसको कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है. वी कैन डू दैट बाय ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन यूजिंग Fehling solution and Tollens reagent. Tollens reagent, that is AgNH3 whole to OH. Alright, so Fehling solution given है list 2 में in number 3 and Tollens reagent in number 2. Alright, so we will mark 2 and 3 for S. Alright, so finally we have our matches. For P we have 1 and 5, for Q we have 2 and 3, for R we have again 1 and 5, and for S we have 2 and 3. Alright, so this is the set of matches that we have for these reactions. So ये correctly given है option number 4 में. P 1 5, Q 2 3, again R 1 5 and S 2 3. So option 4 is the correct answer. This is the required solution and I hope you understood the concept well. Best of luck.